फॉलो कीजिए हमारे फेसबुक पेज को और सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को टेक्निकल सब्जेक्ट और टेक न्यूज़ की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। Hi friends, I welcome you all in the next lecture of DBMS. In this lecture, we will study Armstrong axioms. We will study inference rule for functional dependency. Means some functional dependency have been given to you. We are trying to find out, we are trying to inference further FDs from given FDs. कि कुछ फंक्शनल डिपेंडेंसी दी हुई है, उस दी हुई फंक्शनल डिपेंडेंसी से हम कुछ और FD फाइंड आउट करें. So first of all, inference rule for functional dependency, how we can infer another FDs from given FDs. So the first rule is reflexive rule. Reflexive आपने सुना होगा कि if y is a subset of x, इसका मतलब क्या है? x tends to y. अगर x tends to y है तो हम कहते हैं कि अगर आपने कह दिया कि y सबसेट x का है तो इसका मतलब x फंक्शनली डिटरमाइंड y. x से हम y को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं. सेकेंड इज ऑगमेंटेशन रूल. ऑगमेंटेशन रूल कहते हैं कि अगर x इज फंक्शनली डिटरमाइनिंग y, x से y फाइंड आउट कर रहे हैं, देन xz टेंड्स टू yz, कि xz के कॉम्बिनेशन कोई और एट्रीब्यूट z है that can be augmented with x on the left hand side, it is also augmented with y which is on right hand side. If x to y is given, then xz to yz will be there. Third rule is transitivity rule. Transitivity rule means हम जानते हैं कि अगर x से y दिया हुआ हमें कि x function determining y and y is function determining z, तो indirectly हम कह सकते हैं कि x is function determining z. दिस इज कॉल्ड ट्रांजिटिविटी. हम ज्यादा कहते हैं a से b निकालो, b से c, तो इसका मतलब a से c भी इनडायरेक्टली निकल सकता है. थर्ड इज डिकम्पोजिशन रूल. डिकम्पोजिशन रूल स्टेट्स दैट इफ x इज डिटरमाइनिंग yz, कि x से हम y भी निकाल सकते हैं और x से z एट्रीब्यूट भी, या सेट ऑफ एट्रीब्यूट z कुछ भी निकाल सकते हैं, तो इसका मतलब हम इंडिविजुअल भी लिख सकते हैं कि हम लिखें x से y और x से z. दिस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन rule. Fifth, which is just opposite to the decomposition, that is union rule. It states that if x to y is there and x to z is there, so we can say that from x we can identify yz. बिल्कुल वैसा ही है बिल्कुल उल्टा, जिसके हम इसका ऑपोजिट है कि x से yz था तो x से y और x से z है. यहां पर क्या, अगर x से y x से z है तो इसका मतलब x से yz भी होगा. The last inference rule for functional dependency, that is called pseudo transitivity rule. It states that if कोई, अगर आपके पास x एट्रीब्यूट है, उससे आप y, x एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं जिससे हम y एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स आइडेंटिफाई करते हैं, फंक्शनली डिटरमाइन कर सकते हैं, और कोई और z एट्रीब्यूट है टेबल में, उसके y के साथ कॉम्बिनेशन मिला के हम w निकाल रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि zx can function determining w. zx determining w. I am just repeating my statement. If x to y is there and zy to w, so it is somewhat just like transitivity, है ना, कि हमें लगता है, तो कहते हैं अगर x से y z से w है, इसका मतलब क्या है, zx से आप w आइडेंटिफाई कर सकते हो. दिस इज कॉल्ड pseudo transitivity rule. In these given six rules from six inference rule, the first three, that is called reflexive rule, augmentation rule and transitivity rule, these are known as Armstrong axioms. We generally says that Armstrong axioms are sound and complete. Sound means correct and complete states here that we can find out another three by using these three, कि रिफ्लेक्सिव, ऑगमेंटेशन, ट्रांजिटिविटी के बेस पर हम डिकम्पोजिशन, यूनियन और स्यूडो ट्रांजिटिविटी भी फाइंड आउट कर सकते हो कि अपनी तरफ से तीनों ही कंप्लीट. द नेक्स्ट थिंग इज क्लोजर ऑफ ए सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी. एक्चुअली व्हाट इज द यूज ऑफ आर्मस्ट्रॉन्ग एक्सियम? फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन इज देयर. तो जब हम निकालते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग एक्सियम, इसका मतलब क्या है, कुछ एफडी दी हुई है हमें, उस एफडी से और एफडीज निकाल लेते हैं कि अगर ये दिया हुआ है तो ये, इसका मतलब ये भी है. अगर x से y, y से z दिया तो आप ऐड कर दो, x से yz भी एक फंक्शनल डिपेंडेंसी है. अगर x से y, y से z दिया तो आप एक फंक्शनल डिपेंडेंसी और ऐड कर लो अपने सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी में, जिसे x to z कहते हैं. इसे कहते हैं कुछ और ऐड करना. वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट क्लोजर ऑफ ए फंक्शनल डिपेंडेंसी, कि हम और भी फाइंड आउट करें कि कितनी फंक्शनल डिपेंडेंसी और भी
इन गिवन एफडी से निकाली जा सकती है, उसे बोलते हैं क्लोजर ऑफ ए सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास एफ एफ डी है तो हम फाइंड आउट करते हैं कि इन एफडी से और कौन कौन सी एफडी डिराइव हो सकती है, उसे बोलते हैं एफ क्लोजर। एक क्वेश्चन के थ्रू हम पढ़ते हैं कि क्लोजर कैसे फाइंड आउट करते हैं। क्लोजर कई बार हम सीधा यूज कर रहे होते हैं और हमें पता भी नहीं होता कि हमने आर्मस्ट्रांग एक्सियम यूज किया। फॉर एग्जांपल, जस्ट टेक ए कंसीडर ए केस दैट कंसीडर द रिलेशन स्कीमा आर ए बी सी डी ई एफ। इन दिस रिलेशन वी आर हैविंग 6 एट्रीब्यूट ए बी सी डी ई एफ। जैसे कोई रिलेशन होता है, जैसे आपका स्टूडेंट टेबल बनाए तो उसमें एक रोल नंबर है, एक नेम है, एक फादर नेम है, एक डेट ऑफ बर्थ है, आपकी ब्रांच है, सेमेस्टर है। वैसे ही अब उनको वैसे लिखने की बजाय हमने टेबल में कोई 6 एट्रीब्यूट मान लिया। इन विच फंक्शनल डिपेंडेंसी इज गिवन कि रोल नंबर से नेम निकाल दो, किसी और कॉम्बिनेशन से कुछ निकाल दो, तो ये सब क्या होते हैं? फंक्शनली डिपेंडेंसी। कि ए से बी की फंक्शनल डिपेंडेंसी दी है, बी सी से हम डी डिराइव कर सकते हैं, सी से ई डिराइव हो सकता है और सी डी से एफ। नाउ वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट दैट व्हाट इज द क्लोजर ऑफ ए सी, कि ए और सी के कॉम्बिनेशन से हम क्या क्या निकाल सकते हैं एफडीज में से। सबसे पहले हमने ज्यूम किया एक्स कि इनिशियली हमारे पास कौन से हैं? ए एन सी। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लोजर का नेक्स्ट निकालते हैं कि ए सी से क्या निकल सकता है। अगर ए है तो ए से क्या निकल सकता है? बी। तो हमने उसमें ऐड कर दिया। सो वी कैन से दैट गिवन है ए से बी, इसलिए हमने यूज कर लिया ए बी सी बिकॉज ए टू बी इज गिवन, दैट्स व्हाई वी आर एडिंग बी हियर। द नेक्स्ट स्टेप, ऑन द बेसिस ऑफ ए बी सी what we can have, BC is there, so BC can derive D. Given FDs, we are deriving it because we are having BC to D. Next step, ABCD is there. From ABCD, the third FD given C to E, we are having C, so we can derive E. The reason is C2 is there. The next step, X4, ABCD is given, so from ABCD what we can have? CD to F is there, so we can add F here. Now the next step, X5. So ABCDF, we are using any of the FD, we cannot go beyond that, and finally we are having all of the attribute which is given in the table. It may be possible that you can't achieve all the attributes through given FDs. ऐसा जरूरी नहीं है कि हम सभी attribute हमें find out हो जाए, हमसे कुछ एक दो मिसिंग होंगे, लेकिन अगर हम अब किसी भी FD से गिवन एफडी से कोई और एट्रीब्यूट इसमें ऐड ना कर पाए, जैसे अब नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम सब एफडी यूज कर चुके हैं और इन एफडी से कुछ निकल कर नहीं आएगा। जैसे कि ए से बी तो वो तो इसमें पहले से ही है, बी सी से डी वी आर हैविंग ऑलरेडी डी, सी टू ई वी आर हैविंग ई, सी डी टू एफ इट इज हियर, सो वी कांट ऐड एनी मोर एट्रीब्यूट इन दिस, सो वी आर गोइंग टू स्टॉप इट बिकॉज द प्रीवियस स्टेप एंड द नेक्स्ट स्टेप इज सेम. So whenever we are finding that this condition is there, we have to stop our procedure. So we can say that closure of AC will be equal to AB, CD, E and F. So we can say there is a FD from AC to A, ये reflexivity होती है, AC से B, this is also reflexivity, AC to C, this is a reflexive, because these are subset, A and C are subset. AC to B, how we can find out? Because we can find out A to B. Next is AC to D, because we can derive B from A and BC combination states D. So what we are doing, we are finding out another FD on the basis of this. So this is the final answer for closure of a AC. So we can find out closure in this way. So on the basis of inference rule, and we are trying to find out equivalence of set of functional dependencies. कि to
dependencies are given, we are trying to find out whether two given set of FDs are equivalent or not. कि दो FDs दी हुई हैं, क्या वो दोनों के इक्विवेलेंस हैं? उसका एक कहने का मतलब ये है, मैं आपको समझाऊं कि मान लो कोई FD सेट ऑफ द FD दी हुई है F1, जैसे ये FD का सेट दिया हुआ है, एक सेट दिया है F2 सेट ऑफ FD, जैसे ये हमारे पास एग्जांपल है। कहते हैं कि हम, जैसे हमने क्लोजर फाइंड आउट किया था इससे पहले, कहते हैं F1 का क्लोजर निकालो, तो F1 का क्लोजर निकाल रहे हैं और F2 का क्लोजर निकाल रहे हैं, तो हम कहते हैं कि F1 से कौन कौन सी और FD डिराइव हो सकती हैं बाय यूजिंग ऑफ इन्फ्रेंस रूल्स, और F2 से कौन कौन सी FD डिराइव हो सकती है। हम कहते हैं कि अगर F1 से हम पूरे FDs डिराइव कर लें, उसे क्लोजर निकाल लें F1 का, F2 से भी F2 क्लोजर निकाल लें, हम कहते हैं कि इफ F1 is a subset of F2 closure and F2 is a subset of F1 closure, कि F1 को F2 कवर कर रहा है और F2 को F1, तो हम कहते हैं these are set of equivalence FDs, की एक जहां भी हमें लिखना है किसी टेबल के लिए, कहते हैं या तो ये FD यूज कर लो या फिर ये FD, बात एक ही है। Now we are going to prove it that whether these two given set of functional dependencies are equivalent or not. So first of all F1, we will try to find out these given FD by using F1 first of all। हम F2 को ड्राइव कर रहे हैं, तो गिवन है F1 में हमें निकालना क्या है, A to BC और D to AE। फर्स्ट ऑफ ऑल A to B is given, AB to C दिया हुआ है। इफ AB to C is there and A to B is there, so A can derive B, so there is no need to write B along with A। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं A to C, क्योंकि ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव, ये A to B गिवन है, तो A B से C दिया हुआ है, तो कहते हैं A से B निकल सकता है, सो वी कैन रिमूव एक्सट्रेनियस एट्रीब्यूट। एक्सट्रेनियस मतलब ये एक्स्ट्रा है, इसे हटा सकते हैं। फ्रॉम दिस वी कैन फाइंड आउट A to C, और आप याद रखिएगा तभी कर सकते हैं जब A से B दिया हो, अदरवाइज आप इसे रिमूव नहीं कर सकता। So A to C is there, so we can combine these two FD, what we can have A to BC। ये हमने कैसे निकाला, बाय यूज ऑफ ऑगमेंटेशन। वो कैसे कि लेफ्ट को जो आपने कंबाइन कर दिया राइट और राइट को, और आप जानते ही हैं कि A का मतलब A ही होता है, that's why we are writing only A on left hand side from these two given FD, A to B and A to C। A to C has been derived from AB to C, and I'm giving reason again, क्योंकि A से B given है, इसका मतलब is we can replace B, we can remove B from this FD। So A to BC मतलब this has been proved that we can derive this FD of F2 by given FD of F1, these two FDs। Now the next thing, D to AE we have to find out। So D to A is there, so we are having D to E, and what we have to find out, D to AE। So how we can find out, D to E is there, this FD is there, D to AC, it simply means D to A and D to C। This is just because of decomposition rule। Now we are having D to E given, we are having D to A and D to C। So by combining these two FDs, what we can write out, D to AE, which is from F2। So these two FDs have been drawn from F1। So it simply means that F1 closure is covering F2। Now the next thing is we try to find out that whether F2 closure can find out these given FDs। A to BC is there from F2। What we are doing, we are using these FD and we will try to find out these four FDs। So A to BC is there, it simply means A to B and A to C। What is the reason? Decomposition। D to A is there, so we can say that this is D to A and D to E। This is also because of decomposition rule।
So what we are doing, we can use these Armstrong axiom, these three rules, or we can say that we are having 6 inference rule, we can use it to find out closure. So what we are doing, we are finding F2 closure, and after F2 closure we will find out that whether the F2 closure can have these 4 FD of F1 or not. So A to B, yes, we are having, so this has been found out. We are having A to B from this. D to E we are having, this is also verified. Now these two FDs have been derived. Now we have to identify these two are there or not. So instead of D2AC, it simply means that we can have D2A and D2C. D2A and D2C. It simply means D2A and D2C. And AB to C, when we are having A to B, it simply means that this is A to C. So instead of AB to C, we can write A to C. Instead of D to AC, we can write D to A and D to C. So D to A is there in F2 and A to C is there. That's why we can say, we can write D to C. D to A is there, A to C is there. So by transitivity rules, we can say D to C. So D to C is covered. D to A is given, so this is covered. D to E, that has been covered. So what we have find out whether A to C is there. So A to C is there. So A to B has been covered by this. D to E has been covered by this. AB to C means A to C because B is a subset of A. So A to C has been covered by this. F2 closure. So next FD of D to A, C means D to E, D to A and D to C. These two FD has been covered, D to C and A to C. So we can say that F2 closure is covering all of the FDs of F1 and F1 closure is covering all FDs of F2. That's why these two FD set are equivalent. Thank you for listening. Inference rule and closure and equivalence of functional dependency. In the next lecture we will cover canonical cover or minimal cover, and don't forget to subscribe our channel and like our pages on Facebook. Thank you.